Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well. And as usual, you are practicing. That is very important. Okay. So today we are going to see some more examples related to the topic that we started earlier. So earlier we started the topic present perfect, and with the help of some examples, we tried to understand that how to use present perfect in that particular situation. So present perfect is a kind of situation where you get the kind of idea that it is somewhat related to past situation also, right? So there is need to understand that what is that situation where you have to use present perfect related sentences. So structures are somewhat different from past indefinite or from simple past, but you see that when you use present perfect related sentences, then the sense is somewhat different. So we use a present perfect for experiences, something that started in the past and somewhere or the other, it is in the present situation, it is still there, right? So for that particular situation, we use present perfect. And in the last class, I gave you some examples also, and I asked you to complete those examples. So when you do some examples or different examples, you get the idea that how sentences are being used, what is the kind of sense coming out from all those different sentences. So when you do such kind of different sentences, then you get a better idea that sentences are coming like this is the sense coming out from these sentences. So as you know that we have different situations, and for different situations, we have different sentences, different structures. So it's important that you are aware of those structures, and then you are able to use all those structures as per the situations comfortably. So both the points are important, situation and then structures, because that's how sentences are used as per the situation. Now, there's one more important point that you have to keep in head all the time, and that is that there are so many structures, there are so many situations. So you need to get into the habit of using them. More you use them, better you understand. Better you understand that in a different situations, you ask different questions, you give different answers. That's how you use the language. So that's why understanding structures, understanding different sentences, that point is also important. And then getting into the habit of using them, that is also important. So when the question of getting into the habit comes, it simply means that you have to put as many efforts as you can. So जितने भी आप efforts कर सकते हैं अपनी तरफ से, you have to see that those efforts you are putting. Now, efforts का meaning यही है कि जितनी आप अपनी तरफ से एक्सरसाइजेस करेंगे या ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को ढालेंगे जहाँ पे you are making some questions, you are asking some questions, you have some where you are talking about something, you are making small conversations. So all these things you have to keep on doing. And for this, you have to put efforts. You have to focus on that you are using the language all the time, most of the times. Okay. And when you are practicing alone, then you have to see that what different situations you are talking about. So जितने भी different situations के बारे में आप बात करेंगे वहाँ पे आप different sentences use करेंगे, and that is very important कि different situations आप use कर रहे हैं उसके according आप sentences use कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो वहाँ पे आपको बहुत आइडियाज मिलेंगे कि हाँ क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, स्ट्रक्चर इस तरह से यूज हो रहा है. सो जितना ज्यादा आप ऐसे यूज करेंगे उतना ज्यादा आपकी वो हैबिट डेवलप हो रही है. एंड हैबिट को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सिर्फ हमको ऐसे नहीं समझना कि आई नो स्ट्रक्चर्स, आई नो डिफरेंट सिचुएशंस, and then I would be able to make sentences or talk about something. That will not happen. That will not happen. Why? Because you are not in the habit of thinking and of making sentences. Okay. So that's why you have to get into the habit.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हैबिट हो जाएगी, एकदम से आपको सिचुएशन समझ में आ जाएंगी। काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जैसे ही आपने यूज़ करा उस सिचुएशन में या कोई क्वेश्चन पूछा, वो करेक्ट नहीं आया। राइट, पता है आपको कि हाँ ऐसे यूज़ होना है, ये स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी एट द टाइम ऑफ थिंकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट, दैट विल नॉट कम करेक्टली। सो ऐसे होगा। एंड ये जब ऐसा होगा तो फिर आपकी लर्निंग होगी। एंड इसी तरह से लैंग्वेज में लर्निंग होती है। सो किस तरह से लैंग्वेज में लर्निंग होती है? जब आप उसको यूज करके देख रहे हैं, कंफ्यूजन आ रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, करेक्शंस हो रहे हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे करेक्शंस होते होते देन यू रीच at comfortable level. And when you reach at comfortable level, then you don't think a lot. Then sentences come out naturally, comfortably. Then you think comfortably as you think in your native language. So in the same way, you have to be comfortable with this language. But for that, it's important to practice. It's important to keep on putting efforts from your side. Okay, जितना ज़्यादा efforts आप लगाएंगे, उतना ज़्यादा you will see the result. सो फर्स्ट ऑफ टुडे, आज हम एक्सरसाइज को रिव्यू करेंगे जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दी थी। उसको हम क्विकली रिव्यू करेंगे। राइट, आई होप कि आप लोगों ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी एंड उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आई होप। एंड एज आई ऑलवेज से कि इफ देयर इज कंफ्यूजन, इफ डाउट कम्स, सो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मेक श्योर कि आप उस डाउट को रिमूव करें, आप उसको डाउट को क्लियर करें। ओके, एंड क्लियर करने के लिए you have comment section, you can take the help of comment section, and वहाँ पे by using comment section you can ask your question, you can write your question, you can ask your doubt. Okay, all right. Okay, I shared the wrong one and I'm going to share once more. Give me a moment. All right. Okay, here we go. All right, I'm sharing the page again once more. All right, here we go. Okay. So today is the 38th day of level 2 classes, right? So again, it is important to keep on checking your understanding about all these days that you did different exercises, different structures on these days. So वहाँ पे देखिए कि कितने comfortable हैं, कितने easily आप उनको use कर पा रहे हैं. That is important. समझना, as I said, समझना, topic complete करना is a different thing. बट जो हमारे लिए चैलेंज है, जो टास्क है, वो ये है कि हम उसको कंफर्टेबली यूज कर पा रहे हैं। जितने भी अभी हमने सिचुएशंस करी हैं, सो उन सिचुएशंस को जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे 80 से 85% हम यूज कर सकते हैं, राइट। एंड जितने भी अभी टॉपिक्स किए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगर हम उनको कंबाइन करके देखेंगे तो यू विल सी दैट एटलीस्ट अराउंड 85% sentences you can make, you can think of, you can talk about. So 85%, right? वहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो 85% है, इसमें आप 85% कंफर्टेबल हैं या नहीं। वो 85% में 100% अभी तो कंफर्टेबल होना है। ओके, सो दैट जब 100% कंफर्टेबल हो जाएंगे, इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग ऑल दोज डिफरेंट सिचुएशंस, स्ट्रक्चर्स कंफर्टेबली। Okay, so we were talking about present perfect and कुछ तो examples हमने देखे थे, समझे थे किस तरह से situation में sentences use हो रहे हैं, right? कुछ और examples हैं, वो भी जल्दी से देख लेते हैं, so you will get more idea about this situation, present perfect. I gave you one exercise. We will see that exercise in a moment, but before that, I want to show you these examples. Okay,
quickly see these examples and what is your task. Your work is to complete these sentences. So here you will pause the video, you will complete the sentences as per your understanding. Remember that situation that we are talking about is present perfect. So you will keep that situation in your head, and keeping that situation, you will try to complete all these sentences. Words have already been given in the bracket. So you are going to use these words only, and you will see that what is the sense coming from this sentence, and importantly, that how will you complete it, okay? Whether you use past indefinite or present perfect. जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें या पास्ट इंडेफिनिट यूज करें, राइट? सो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्विकली कंप्लीट दीज सेंटेंसेस एंड देन मूव फॉरवर्ड, फिर आगे आप रिप्ले करेंगे, ओके? चलिए, सो मीनवाइल आई एम गोइंग टू write in these blanks. So for example, we not write any English test this month. So someone is talking about this month. So this month it is still, right? It's still going on, right? So if it is still going on, so it means that you are getting the idea that we have not written any English test this month. Now, यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि दिस मंथ की बात हो रही है और बोल रहे हैं कि अभी हमने इस मंथ में कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं किया है, नहीं लिखा है, राइट? सो अभी मंथ चल ही रहा है, अभी भी बाकी है, लेट्स से या अभी 10 डेज बाकी हैं या 5 डेज बाकी हैं मंथ कंप्लीट होने में। सो वहाँ पे चांसेस है कि हम टेस्ट दे दें, हमारा टेस्ट हो जाए, राइट? सो दैट्स व्हाई again the sense is coming that yeah, that it should be in present perfect situation, okay? Now, my grandma 15 countries in her life, okay? So someone is talking about grandma, and this is more related to her experience, right? Okay, unka experience kya hua hai. So again, remember that when we talk about experience, then there also we use perfect one. So my grandma has visited 15 countries in her life. My grandma has visited 15 countries in her life. So this is about her experience, that she has done something like this. So what has she done? She has visited 15 countries. Okay. Third one is quite simple because this is the hint you are getting yesterday. All right. So easy to understand. What will you say? I had pizza for lunch yesterday. Okay, the next one is also very simple because you are getting the hint here last week. So again, you have the idea that something related to the past situation happened earlier, right? It doesn't have any relation with the present situation, okay, because it's related to last week. So they now remember that the second form of read is read. Okay, spelling will remain same, but the pronunciation will be different and it will be pronounced as read. And that's how the person will get the idea that you are talking about past situation. Okay, so they read an interesting book last week. Someone is talking about last week, and the person is saying they read an interesting book last week. Okay, and then in 1995, someone is talking about 1995. So again, easy to remember because someone is talking about past. All right, 1995. So my dad. What is the second form of swim? You should know, because if you are aware of the second form, then only you would be able to speak or you would be able to write correctly. Okay. So my dad swam. Okay. So something he did in the year 1995. What did he do? He swam in Pacific Ocean. Now, remember that swim is a kind of verb that has three different forms. So you should be aware of all those three forms. So second form is swam.
Okay, pronunciation is swam. And then third form is past participle form that we use in perfect, present perfect, that is swam. So यहाँ पे देखिए कि pronunciation is also important. So you should know the pronunciation of all the three forms. Mostly first form का तो mostly होते ही है pronunciation ठीक, लेकिन second and third form में spellings are important, and then pronunciation is also important. So swam and swum. All right. So again, a kind of idea कि हम किस तरह से present perfect यूज कर रहे हैं, किस तरह से past indefinite या simple past यूज हो रहा है, किस तरह से उसका sense निकल रहा है. Okay. So with the help of these examples, then you have to see that at the time of talking about something, at the time of saying something, you are able to differentiate between the two parts, where to use perfect, where to use past indefinite. Because this you will use at the time of speaking, when you are talking to someone, when you are discussing something. So there you have to use these different sentences. So here with the help of examples, you are getting the idea कि किस तरह से हमको use करना है, उसमें क्या difference है. Okay. All right. Now we'll see the exercise that I gave you in the last class, and I asked you to complete it. Again, we will review this exercise. So I'm going to tell you some of the sentences just so that you get the idea कि कैसे हमको इसको complete करना था. So the first exercise was related to already and yet, and ये हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि yet we use in negative sentences, we use in questions, and already we use in positive sentences. अब यहाँ पे important point यही है that you understand the sense of these sentences. So we are too late. We are too late. The bus, what will you say? The bus has already left. The bus has already left. So here I'm not going to write anything. So in case if you want to review this exercise, or if you want to do this exercise again, so you just listen to these examples and then again do by yourself. Okay, do by yourself. So there you will understand in a better way. Second one, I won't have much free time this weekend. Why? What is the reason? I have not done my art project yet. Yeah, so here we can use the word yet. I haven't done my art project yet, and this is the reason I won't have much free time this weekend. I will be busy because I will complete my art project. I haven't completed it yet. Okay. Now, see the sense, the kind of sense is coming out from this sentence when you use it. Okay. So something is related to the present situation, right? You haven't done something and you are talking about it. Okay. Can you see the notice board? Next one. Can you see the notice board? Okay, here you have to make a question. Has the plane landed? Has the plane landed? Has the plane landed yet? Okay, so in both ways, you can complete the question. Okay, next one, come on. I can hear the band, the concert. What will you say? I can hear the band. Yeah, so it means that you are getting some sort of idea. The concert has already started, right? So here you can use already because it has already happened. Okay, so you use this word already when you get the idea that something has happened before. So the concert has already started, and you can get that idea by just hearing the band. Next one, Steve must be in Paris now, but what will you say? But negative sentence, right? But we have not heard from him yet. But we have not heard from him yet. So again, you are seeing the word here. You need to use the third form, that is heard. Okay, and again, see the sense that is coming out from the sentence. Okay.
All right, so all these are simple and easy sentences, and I hope that कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अगेन इम्पोर्टेंट ये है कि सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए, हमको समझ में आ रहे हैं. दैट इज़ वेरी गुड, इम्पोर्टेंट है. लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, when you have a kind of similar situation, राइट, जहाँ पे इस तरह की सिमिलर सिचुएशन है एंड यू वांट टू यूज सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वहां पे उन सिचुएशंस में आपको ये सेंटेंसेस स्ट्राइक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, एंड देन यू आर यूजिंग देम करेक्टली. Okay, then you know what to say, how to make a sentence in that particular situation. Okay. Okay, now quickly we'll do the second part. Okay, here and here in all these sentences, you need to use just, right? So again, you know that you have to make a present perfect related sentences. You have to use just, and you know what is the sense from these sentences that you need to take out. So my hair is wet because what? Because I have just taken a shower, right? So यहाँ पे in examples में you have to think of a verb also, right? That what verb will you use, and there you have to use the third form of that verb. So यहाँ पे हमने take use किया, take का हमने third form use कर लिया, taken, because that's how the sentence will make a sense. तभी sense निकलेगा, right? My hair is wet. क्या reason है? मेरे बाल गीले हैं. क्या reason है? Because I have just, bus भी, I have just taken a shower. Okay. Second one, everyone is coming out of the cinema. Everyone is coming out of the cinema. So when people come out of the cinema, when the movie ends, right? So there you are getting the idea. Everyone is coming out of the cinema. The film has just ended. The film has just ended, right? So here we are using the third form of end. The film has just ended. Okay, so here in these examples, you are also using action verbs in their past participle form, in their third forms. Okay, third one, Mike and Lisa will be here soon. The train has what? What will you say? The train has just arrived at the station. So ये भी आपको देखना है कि arrive आपके ध्यान में आ रहा है, आपको hit कर रहा है. Take आपको hit कर रहा है कि हाँ, that I need to use the word take. And second example में जो हम use कर रहे हैं वो आपको hit कर रहा है कि yeah, this is the word I need to use. So that's how vocabulary is also very important. Without vocabulary, you cannot make sentence. So the structures are important, vocabulary, right? And then pronunciation, and then right situations, right structure. So in short, everything is important, right? That way. Okay, let's do the fourth one. I'm feeling great. Okay, I'm feeling great. What is the reason? The reason is what? First prize in the competition. So what will you say? I'm feeling great. I have won the first prize in the competition. So this is the reason I'm feeling great, because I have done something. What is that? I have won the first prize in competition. Okay, so here again, with the help of these examples, you are seeing that we are completing these sentences with the help of present perfect situation. Importantly, you have to see the sense coming out from these sentences, and uh, you have to understand that that's how we use such sentences. Okay, so इस तरह से हम इन sentences को use करते हैं. So with the help of these different examples, आप देख रहे हैं कि सेंटेंसेस कैसे यूज हो रहे हैं और किन सिचुएशन में हम उनको यूज कर रहे हैं, क्या हम सेंस देना चाहते हैं जब हम ये सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग clear idea about these sentences, and I hope that you would be able to use in a more comfortable manner with the help of these examples. Okay, but for that you need to think. इसके लिए आपको सोचना है, इसके लिए आपको sentences try करना. ओके, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, सिर्फ हमको इन्हीं एग्जाम्पल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. यू हैव टू थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स, एंड देन यू हैव टू सी दैट इन योर day to day,
day-to-day activities, what are those some of the sentences where you can use present perfect? What kind of sentences you think of or you make when you do your daily activities or when someone does? Okay, there you see that whether you can use present perfect or you can use some other structures. So that's what you have to pay attention to the different structures. All right, let's do the next part. Here you had to first complete the question and then a short answer. You can also give the full answer, but here uh, you had to use the word ever. Okay, and as you know that ever we use while making present perfect questions, and we use ever only in questions. Okay, so that way ये जो हम देख रहे हैं already, yet, just, never, ये हमारे लिए कुछ hints हैं कि कहाँ पे हमको क्या यूज करना है, राइट, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे yet तो हमने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करना। ऑलरेडी जस्ट है हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं, एवर जो है हम क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं। सो दैट वे it is somewhat easier to see that how to make sentences, how to use them in different sentences. Okay, so you taste Thai food. So you have to complete it in present perfect situation. So what will you say? Have you tasted Thai food? So someone is asking question. So there is a person, a person is asking this question. Have you tasted Thai food? Answer is coming, no, I haven't. Okay, so short answer, no, I haven't. You can also give the full answer, no, I haven't tasted Thai food. Have you ever? So जैसे ही आपने ever use किया, so it means कभी. So ever will give the sense of कभी, कभी. So again ये depend करता है पूछने वाले के ऊपर कि उसको कैसे यूज करना है। Have you tasted Thai food? This is also okay question. Have you ever tasted Thai food? This is also okay question. So it doesn't mean कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा एवर ही यूज होना चाहिए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन और ऑफ द सिचुएशन कि आपको क्या यूज करना है। ओके, दैट वे। सो सेकंड वन, योर सिस्टर सी शार्क। Has your sister even, has your sister ever seen a shark? So ever, okay. Has your sister ever seen a shark? Okay. Yes. What is the answer coming? Yes, she has. Or yes, she has seen the shark. Okay. So short answer, yes, she has. Or full answer, yes, she has seen the shark. Third one, the kids be to roam. Okay, so now you have to see that here be is given, so you need to use the third form of be. Okay, so have the kids been to Rome? Have the kids ever been to Rome? So here we can use the word ever. Without ever, also you can make this question, but when you use the word ever, it means kabhi. So that's why for that sense we are using ever. Have the kids ever been to Rome? No, they have never been to Rome. Okay, no, they haven't. Okay? No, they haven't. They have never been to Rome. Okay, you can say that way also. All right, last one, Jack ride a horse. So question, has Jack ever, what is the third form of ride here? You should know, and you should know the spelling also. Then only you can write correctly and can speak correctly. So what is the past participle form or third form of ride? It is ridden. So has Jack ever ridden a horse? Okay, question is coming and the person is giving, no, he hasn't. No, he has never ridden a horse. Okay, or you can give answer, yes, he has. Yes, he has ridden a horse. Yeah, okay. So as per the question, you can give the answer, right? So you can choose your question, you can choose your sentence as per the situation. So it depends on the person.
ओके, सो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस ऐसे ही आने, आंसर्स ऐसे ही आने। ये पूरा सारा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या सिचुएशन है। उसी के अकॉर्डिंग यू नीड टू यूज करेक्ट स्ट्रक्चर एज पर द सिचुएशन. Okay, these are the examples that are actually helping you, that you have to think something like this, you have to make a question like this, or you can give answer like this. So all these are hints, ideas for you. And again, what is important is that you make your own sentences, that you use your own sentences, and that's how you understand in a better way. So understand करने के लिए, अच्छे से understand करने के लिए आपको खुद अपनी situations के according, right? So you have to think about situations also, right? That if I'm in this situation, then what will I say? How will I ask question? If I ask this question, then what will be the answer? What is the possible answer if I ask this question? Okay, so that way you have to practice. So आपको ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद ही क्वेश्चन पूछना है, खुद ही आंसर देना है, राइट? इन केस where you don't have anyone, okay, anyone who can practice with you in that particular situation, you have to practice that way, right? That you are thinking about question also, and then you are giving the answer also. Okay, that way you can practice, and you need to make sentences or ask questions as much as possible. जितना ज़्यादा ऐसे situations को ध्यान में रखते हुए, right? Questions, situations, answers use करेंगे, right? So उतना ज़्यादा idea मिलेगा. And the way you talk about normal things, उसी तरह से देखिए कि how will you ask, how will you say something, the way you ask, the way you say about something in a normal manner, right? When you use your own language and when you ask about something, or when you give some explanation, when you talk about something, how will you do that? With the help of this language, with the help of different structures you have understood, you have learned. How will you do that, right? So कैसे करेंगे? तो जितना ज़्यादा आप ऐसे करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिलेंगे। जितने ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, वहाँ पे हो सकता है कि सेंटेंसेस करेक्ट आए, कन्फ्यूजन आए, डाउट आए, राइट? तो वहाँ पे वो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे देखें कि क्या करेक्शन होना है, कैसे सेंटेंस यूज होना है, क्या सेंस निकल रहा है, राइट? सो देन यू कैन revisit the structures, and then you can review those structures. You can review some of the exercises also to understand in a better way. Okay, so so far we have done different situations, and all these different situations are very important uh, in terms of making your foundation strong, right? So if you do all these structures that we have done so far, if you understand, and if you use them a lot, right? So it means you have a very strong foundation, right? So foundation is very strong, and then you would be able to talk about a lot of things. You can do that very comfortably, very easily. But उसके लिए आपको ऐसे continuously you have to use, right? Use different sentences continuously on regular basis, right? Okay. चलिए, अभी हम बात करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन, राइट? सो ये सिचुएशन तो कंप्लीट हो गई, बट जो चैलेंज है वो यही है कि आप कितना कंफर्टेबली इसको यूज कर पा रहे हैं, आप कितना कंफर्टेबली इसको समझ गए, एंड देन एज पर द सिचुएशन यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, यू आर यूजिंग सेंटेंसेस. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मली सेंटेंसेस कम आते हैं, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट भी ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन आएंगे. सो अंडरस्टैंडिंग तो होना ज़रूरी है, राइट? तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कब यूज़ होना है, किस सिचुएशन में यूज़ होना है. सो जो मोस्टली जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वो देखेंगे आपके वर्ब टू बी के सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. Present indefinite, very important. Past indefinite, very important.
right possession, very important, and then has to, have to, very important. So एक तरह से important तो सभी है, लेकिन हमको ये देखना है कि नॉर्मली ज्यादा क्या यूज होता है, राइट? सो नॉर्मली जो ज्यादा यूज होता है वो तो यूज होना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूज नहीं हो रहा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, उसको हमको पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज होता है, किन सिचुएशन में यूज होता है। क्योंकि लेट्स से कि आपको सिचुएशन में अगर आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज करना है, राइट, आपको सिर्फ यही बोलना है दैट आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट, लेकिन जब तक वो सेंटेंस, वो सिचुएशन का आइडिया नहीं होगा आपको, यू विल नॉट बी एबल टू यूज, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स important to be aware of all the different structures so that you use them whenever you want to use them, right? Whenever you need them. Okay, चलिए अभी हम quickly will go back to um, okay, one more situation, and quickly we will talk about this situation. This situation is known as past perfect. Okay, so again, this is important. Again, it's not used a lot, right? But it is used, right? यूज तो होती है, right? कुछ ऐसी situations होती हैं जहाँ पे past perfect यूज होना है, उनको यूज करना है। ऐसे कुछ बातचीत करते वक्त ऐसे कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे पास्ट परफेक्ट ही यूज होना है। ओके, सो इट मीन्स आइडिया होना चाहिए कैसे यूज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट, राइट? पास्ट की ही बात हो रही है, लेकिन देन वी कॉल इट परफेक्ट। ओके, सो पास्ट के हमने कुछ सेंटेंसेस पहले भी देखे हैं जिसमें हमने बोला उनको पास्ट इंडेफिनिट, या हमने बोला सिंपल पास्ट, जहाँ पे हम वॉज वर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। आई वेंट टू द मार्केट, आई completed my work yesterday, last week I watched a movie, such kind of sentences. Now we have one more situation that we call past perfect. So what is the reason we call it perfect? हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करें या पास्ट परफेक्ट यूज करें? सो यहाँ पे ये थोड़ा सा चैलेंज होगा कि समझना कि वेदर टू यूज पास्ट परफेक्ट और वेदर टू यूज पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाए या पास्ट परफेक्ट यूज किया जाए। सो उसको समझना के लिए एक सिंपल सा पॉइंट है जो हम ध्यान में रखेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट यू विल इजीली यूज पास्ट परफेक्ट इन दोज सिचुएशंस। ओके, सो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट सिंपली ये है कि टू सेंटेंसेस जब आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट इस सिचुएशन में यूज होगा जहां पे किन्हीं दो चीजों के बारे में बात हो रही, पास्ट में कोई भी दो चीजें हुई हैं, उन चीजों के बारे में बात हो रही है। तो उन चीजों में हमको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है? पास्ट परफेक्ट के साथ वहां पे पास्ट इंडेफिनिट भी यूज होगा। सो एक पॉइंट क्या है, वेरी सिंपल सा, कि जब भी पास्ट परफेक्ट आ रहा है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ रहा है। ओके, जब भी पास्ट परफेक्ट आ रहा है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ रहा है। और ये दोनों सेंटेंसेस क्यों यूज होंगे? ये दोनों सेंटेंसेस इसलिए यूज होंगे ताकि आप इन दोनों सेंटेंसेस में ये बता सकें कि पास्ट में सबसे पहला काम कौन सा हुआ, राइट? क्या सिचुएशन, पास्ट में कोई दो काम हुए, राइट, लेकिन कौन सा पहले हुआ, कौन सा उसके बाद में हुआ, ये सिचुएशन को यूज करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। सो जो भी काम पहले हुआ है, राइट, उसको हम किस में रखेंगे? उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। ओके, एंड जो काम सेकंड हुआ है, उसके बाद हुआ है, उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि इसका जो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? पास्ट परफेक्ट में व्हेन यू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस, वहां पे आपको सिंपली यू हैव टू यूज हैड विद ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, देयर यू हैव टू यूज हैड, and with that past participle, we also call it verb third form. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने थर्ड फॉर्म यूज किया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो जहाँ पे भी परफेक्ट सेंटेंसेस आ रहे हैं वहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। ओके, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझना
कि वो सिचुएशंस क्या हैं, ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। सो पास्ट परफेक्ट आप उस सिचुएशन में यूज करेंगे जहाँ पे कोई भी दो चीजों के बारे में बात हो रही है, राइट। एक तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए, एक बात हो रही है होमवर्क फिनिश होने की, एंड दूसरी बात हो रही है लाइट जाने की। वेंट आउट, गो आउट इट मीन्स जाना, राइट। लाइट जाने के सेंस में यूज कर रहे हैं। उसका सेकंड फॉर्म यूज कर लिया हमने, लाइट्स वेंट आउट। सो यहाँ पे क्या आइडिया मिल रहा है हमको इस एग्जाम्पल से, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, दो चीजें हुई, लाइट्स चली गई, होमवर्क फिनिश कर लिया गया, राइट। सो लेकिन इन दोनों में से पहली चीज कौन सी हुई, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क पहले ही फिनिश कर चुका था, राइट। सो ये पहले हो चुका था, अपना होमवर्क पहले ही मैं कंप्लीट कर चुका था। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट्स गई, जब लाइट चली गई, मैं अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर चुका था, राइट। सो इन सच सिचुएशंस वी यूज पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम पास्ट परफेक्ट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि पास्ट में कोई दो चीजें एक साथ हुई, उनमें से हमको ये बताना है कि पहले कौन सी हुई, राइट, और फिर उसके बाद क्या हुआ। इसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। ओके, सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं हम कि दो चीजें हुई, राइट। टेकन ब्रेकफास्ट एंड यू कॉल्ड मी, दो चीजें हो रही हैं, लेकिन इन दोनों में से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई एक चीज पहले हो गई, और वो क्या हो गई थी उसको हम पास्ट परफेक्ट में रख देते हैं। सो आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आपको पता है कि हम हैव का थर्ड फॉर्म जब यूज करेंगे तो वो हैड आ जाएगा। तो ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे हैड दो बार आ रहा है, राइट, लेकिन वो करेक्ट है। हैड दो बार आ रहा है, करेक्ट है, क्यों, बिकॉज हैक है तो हमारा ये है हेल्पिंग, एंड एक हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हमने हैव का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ओके, सो ऐसे नहीं सोचें कि ये हैड दोनों एक साथ आ रहा है, इट इज रॉन्ग, नो इट इज करेक्ट, परफेक्ट। सो आई हैड ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड। सो मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था जब आपने मुझे कॉल किया था। सो हमको ये बताने के लिए कि पहली चीज कौन सी हो चुकी थी, हमने परफेक्ट यूज कर लिया, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। ओके, अब यही सेंटेंस को जल्दी से ऐसे देखिए, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, I took breakfast when you called me. Now, when you see this sentence, I took breakfast, here in this sentence, सबसे पहली चीज कि दोनों ही parts indefinite में हैं, जहाँ पे हम second form use कर रहे हैं। एंड ये सेंटेंस में आप देखिए कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे हम ये नहीं बता पा रहे कि कौन सी चीज पहले हुई। ओके, यहाँ पे हम सिंपल सा सेंस दे रहे हैं, आई टू ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया तो मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा सेंस निकल रहा है कि जब आपने मुझे कॉल किया था मैंने ब्रेकफास्ट तब किया। I took breakfast when you called me. Okay, so there is a huge difference. Okay, दोनों sentences में huge difference है। Okay, when we make sentence like this, तो देखिए सेंस क्या निकल रहा है। एंड जब हम हैड से सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेंस डिफरेंट निकल रहा है, एंड उसमें हम ये बता पा रहे हैं कि कौन सी चीज पहले हुई थी, कौन सी चीज, कौन सा एक्शन पहले हो चुका था, राइट। सो past perfect is तरह से important है when we have such a situation where we want to talk about past and two things happen in the past, and there we want to talk about that which one had happened earlier, right. There we will keep that part in past perfect. Okay, and then we will use the second part which happened after that. Okay, so that's how we are going to use past perfect. Okay, we are going to talk about past perfect in next class also, and you will see some more examples
I hope with this explanation, it's somewhat easier to understand where we use past perfect and how we use the structure. Okay, so structure is quite simple. Structure was simple, no problem. Okay, but you need to see that किन situations में हमको past perfect use करना है and उसका क्या sense निकल रहा है, right? Right. From here we will continue in the next class. Okay. And आप भी आपके लिए अभी टास्क ये कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सोचेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल्स देखे आपने, वो आप भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सोचेंगे जहाँ पे आप देखें कि पास्ट के बारे में आप कुछ बात कर रहे हैं और वहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है वो इसलिए यूज हो रहा है कि आप बताना चाह रहे हैं कि दोनों में से कौन सा वर्क पहले हुआ, राइट? उसको यूज करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं. सो थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स एंड इफ यू हैव सम एग्जांपल्स यू कैन मेंशन दोज एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट I review those examples, right? That would be better that you share some examples in the comment section. Okay. And if there is some confusion, you can also share that with the help of example that I think like this and I'm thinking about this example in this way. Okay. So you can think that way also and you can do it. All right, everyone. So you will think of some examples where you will see that how past perfect is being used. So today we have only talked about positive sentences of past perfect, and today only two examples. With that two examples, help of two examples, you have seen that how past perfect will be used. Okay, in the next class, but we will do some exercise and we'll do more sentences to understand in a better way. Okay, and this much for today. We will continue in the next class. Till then, keep practicing, keep making sentences, keep using sentences, keep revising all the structures. Okay, keep reviewing all the structures and make sure that you are using all of them. Okay, and also remember that the classes are also going on. So if you spread the message, if you tell others about all these classes, then it would be wonderful. Okay, right? So we are going to meet in the next class, everyone. Till then, bye bye. Take care.